ग्रीवेंस तो आप कुछ भी बना दें, आप मतलब दिल का ताड़ बना दें तो हमको आप पहले बताइए, चलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में बताइए कि कंटेम्प्ट कैसे बनेगा। प्लीज मैम, इस तरीके की बहस मत करिए। आप महिला हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस आप बंद करिए। आपको जिसने भी सिखाया है गलत सिखाया है ये। जब ओपन कोर्ट में डिक्टेशन होता है तो रिटर्न आर्गुमेंट नहीं होता है। या तो आप बहस मत करिए, रिटर्न आर्गुमेंट फिर आप बहस नहीं करेंगी। बहस में करूंगी नहीं, फिर रिटर्न आर्गुमेंट नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसने सिखाई आपको प्रैक्टिस? आप आर्गुमेंट रिपीट मत करिए, वो तो आप कह चुकी हैं, उसको हमने लिखा दिया। चलिए, उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट मांगे गए उसके बाद ही 2 दिन के बाद इनके द्वारा टर्मिनेट कर दिया है। सेम ग्राउंड है क्या इसमें भी? जी जी, आइडेंटिकल तो भाई इसका उसका दिखाइए नोट। मैं इसमें रिटर्न आर्गुमेंट और ये डॉक्यूमेंट। रिटर्न आर्गुमेंट यस सर। फिर आप बहस नहीं करेंगी? नहीं, बहस में करूंगी। नहीं, फिर रिटर्न आर्गुमेंट नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसने सिखाई आपको प्रैक्टिस? सर ये साइटेशन क्या है ये साइटेशन है सर। हाँ, साइटेशन दे दीजिए। सिर्फ साइटेशन लूंगा रिकॉर्ड पर बस में। ये मेंटेनेबिलिटी का है इसमें। क्या मेंटेनेबिलिटी? इनके प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन था कि मेंटेन ही नहीं है पिटीशन। जजमेंट्स बता दीजिए कौन से जजमेंट्स हैं, उनको मैं रेफर कर देता हूँ। ये जजमेंट कौन सा दे रही है, कौन सा जजमेंट रेफर कर रही है? आपने ये इतना बड़ा बंच दिया, वापस कर दीजिए, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। ये जजमेंट आपका ये है क्या, सुनील वर्मा वाला? श्रीमती कीर्ति बच, वाइफ ऑफ श्री पंकज। 4242 ना? यस मैम। जी बताइए इस जजमेंट में क्या लिखा है? मेंटेनेबिलिटी के हिसाब से R7 रिप्लाई करते हुए इम्प्यूट ऑर्डर P1 और P6 जो पास किया है डिक्टेशन के बाद उनके हिसाब से क्वालिफिकेशन आधा लिया हुआ है, जबकि हमको जो टर्मिनेशन दिया गया है वो उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के आधार पर उन्होंने टर्मिनेट किया है। ठीक लिखिएगा इसमें। इस वाले 74.1 में एक एडिशनल आर्गुमेंट इनका जोड़ लीजिएगा पिटीशनर का। मैं डिस्कस सुन ले एक बार। She places reliance on the order of the coordinate bench. सुन रहे हैं? Order of the coordinate bench at Indore in WP 4242/2015. Mrs. Kirti Bagde, BUDDE, wife of Shri Pankaj Bagde versus the state of MP and others, dated 7/11/2016, wherein Honorable Coordinate Bench has held that there should be that the management should ensure that they have conduct rules and disciplinary service rules in the institution for their staff contemplated in their bylaws, and placing on the reliance on this judgment, it is submitted that in absence of any rules or regulations, no steps could have been taken by the respondents to not to renew the contract. इसकी डेट भी कॉन्ट्रैक्ट की P1 की 27/5/2022। ठीक है, चलिए हाँ बताइए। मतलब ये हमने अनेक्सर P1 चैलेंज की ऑर्डर P1 इसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमको टर्मिनेट किया है। मैंने ये WP नंबर इसी के जस्ट बाद है उसमें अनेक्सर P1 सॉरी P2 और P3 एक एक करके बताइए कि इस केस में जो बताना है वो बताइए। कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बता रहे हैं और जो ये सरकार को अपनी SR रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट भेज रहे हैं उसमें हमको रेगुलर बता रहे हैं। हमको बताइए कहाँ है वो रिपोर्ट एनेक्चर? इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पेश किए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किए जा रहे हैं। कह रही है ना कि आपको रेगुलर बता रहे हैं। यस तो बताइए वो दिखाइए डॉक्यूमेंट एनेक्चर कौन सा है? SR रिपोर्ट और पेज नंबर 71 पर। यस सर दिखाइए। सभी तीनों कनेक्टेड ही हैं क्योंकि सब जगह डॉक्यूमेंट आपको 71 किसके साथ लगाया है आपने? P2 और P3 P2 एंड P3 यस मैम। P2 और P3 देखिए मैडम फिर डिसाइड करते हैं। फिर आप पेज नंबर कहाँ पर? यस मैडम एक मिनट।
My lord, हाँ, पेज नंबर my lord 29. 29, पेज 29। Yes, my ये lord. तो आपका भविष्य निधि का कागज है, ये पेज 29, yes, इसमें पेज नंबर कॉलम 3 देखना कॉलम 3 जी, जी, पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 जी, बताइए। EC पेज नंबर 30 my lord. इसमें पेज नंबर 30 श्रीमती ज्योति जाटव. कहाँ लिखा है शिव? पेज कहाँ नंबर लिखा है? 30 my lord. नहीं, दिस इज केस ऑफ मिसेस राजश्री साहू। नो my lord, मैं ऐसा रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि सर इसमें ऐसा रिपोर्ट तीनों में पेश कर रहे हैं सरकार को, और ये तीनों को मतलब कंफर्म बता रहे हैं. आप ये पेज 30 क्या ज्योति जाटव का रेफर कर रहे हैं? यस माय लॉर्ड. ये ज्योति जाटव की ज्योति जाटव। इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं भाई वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट बेस के पेश किए जा रहे हैं. 30 में क्या लिखा होगा? P2 माय लॉर्ड. T2 ये 3 नंबर 4 नंबर पे ज्योति जाटव का नाम लिखा होगा। यस मैम. कहाँ लिखा हुआ है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस माय लॉर्ड. डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सोशल साइंस? ठीक है, ठीक है। इनका नाम कहाँ पर है? साहू मैडम का, राजश्री साहू का नाम 6 नंबर माय लॉर्ड. हाँ 6 नंबर जी। और इसी में अभिषेक जाटव भी है सर. हाँ, ये कहाँ दिखा रहे हैं? सर 19 नंबर, पेज नंबर 30. हाँ ठीक है, इसमें कहाँ दिखा रहे हैं कि ये रेगुलर फैकल्टी है? यस माय लॉर्ड. और माय लॉर्ड अब ये पेज नंबर 31 PC देखिए माय लॉर्ड. ठीक है, यस। इसमें लिखा सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है फ्रेश लिखा, फ्रेश जी? कहाँ लिखा है, पढ़िए। मेंबर ऑफ नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स लिखा है। फुल टाइम टीचर, सॉरी मैडम, फुल टाइम लिखा है भाई। फुल टाइम तो ठीक है, फुल टाइम होना, फुल टाइम इज नॉट द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट. There is a difference between mode of appointment and the nature of appointment. One can be a part-time, one can be a visiting faculty, one can be a regular faculty. Then the nature is that whether the appointment is regular, contractual, ad hoc. मैडम अगर स्ट्रेटेजी 20 के तहत बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ही वो तो आप आर्गुमेंट रिपीट मत करिए, वो तो आप कह चुके हैं, उसको हमने लिखा दिया। चलिए, ये आपने एक नया आर्गुमेंट लेकर आए, ये जोड़ लेना तीनों में, इसमें तो पहले वाले में भी जोड़ लेना। प्लेसिंग रिलायंस ऑन द जज ऑन द पिटीशन WP 5984/2023 which petitioners counsel wants this court to refer to in even two other cases, though she has not filed this document. It is pointed out that on page 30 of annexure P2, documents which were submitted by the Maharshi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya for national to the competent authority for national assessment and accreditation. जी, हाँ accreditation, yes, council Bangalore 2 आएगा, forgive it 2 इतना। Abhishek Patel's name appears at serial number 19, whereas that of Miss Rajshri Sahu at serial number 6 and that of Srimati Jyoti Jatav at serial number 4. They all have been shown to be full-time teachers. They all have been shown to be a regular teacher, and therefore this contention of the respondents that petitioner is a contractual employee is factually incorrect. इसमें जोड़ लीजिएगा, तो जहाँ मैंने लिखा था मेरा उसमें, that learned counsel for the petitioner has not brought on record copy of the appointment order to demonstrate that petitioner was ever appointed on regular basis after due approval of the board of management. Next back. my lord, Please बीच में नहीं, sorry, this is not the way. इसमें और
अनेक्स उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट मांगे गए उसके बाद ही 2 दिन के बाद इनके द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, वो लिखा दिया, लिखिए। अब ये राष्ट्रीय साहू में करिएगा, जो डिसीजन की डेट है उसमें 13/4 थी, इसमें 11/4 है। ठीक है, नोटशीट की डेट ये लेकर आएंगे एंड कोई सेम, बाकी सब सेम है, ये लीजिए। ये और लिख लीजिएगा that the judgment which is cited by learned counsel for the petitioner in case of Mrs. Kirti Bagde is not applicable to the facts of the present case, in as much as in that case petitioner was appointed to a school, full stop. Her PF was deducted and her services were temporary. Thereafter, she was terminated. In that backdrop, Honorable Coordinate Bench held that Honorable Coordinate Bench observed that the educational institution, within inverted commas, that the educational institutions are running like industry with huge infrastructure like 5-star facilities, but there is no service conditions available to their staff. Full stop, inverted commas closed. It further observed that under such facts and circumstances, statutory benefits like provident fund, medical facility, leave, etc., which is admissible to the government teachers, are being denied to them, therefore, CBSE and BOSE should ensure that before granting affiliation, they should ensure that there should be conduct rules and disciplinary service rules in the institution for their staff contemplated in their bylaws. Full stop. However, facts of the present case are different. The respondent university is imparting higher education. Full stop. Higher education is regulated by a regulatory body, namely University Grants Commission. Full stop. Regulations framed by the University Grants Commission are binding even on private universities. Full stop. Thus, as is apparent from the note sheet dated, ये डेट तीनों के अलग अलग डाल दीजिएगा, 11/4 है इसमें, 11/4/22, that petitioner Miss Rashri Sahu did not fulfill the qualifications prescribed in the regulations, a decision was taken to discontinue the contractual employment, then that cannot be faulted with. In fact, petitioner has failed to bring on record copy of appointment order showing that she was regularly recruited on the post of assistant professor, and that the person concerned fulfills all the requirements as envisaged by the UGC for such appointment, as if a person is appointed behoves the qualifications prescribed by the UGC, then that may call for an action against the university itself by the regulatory body, namely University Grants Commission. And when tested in light of these facts, then impugned order deciding not to continue the contract employment of the petitioner cannot be faulted. In fact, Lordship, in that petition, there are two applications. One is contempt filed by Madhya. Kisme 74.1 mein? 74.1. And there is one application filed by us for perjury. So that can also be disposed of. Since this petition is disposed of, therefore, contempt किस बात का लगाया है? That the jurisdiction should have been vested in registrar, not in deputy registrar. Contempt ना लगेगी. If there is court से stay था क्या? नहीं, there is no order at all. Santosh Kumar, let us be. मैं नहीं तो I'll have to look into the file. There is no stay order. There is no stay. फिर contempt किस बात का लगेगा? रजिस्ट्रार को फाइल करना था एफिडेविट, उनकी जगह पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने। That is only एप्लीकेशन लगी है, उसके पीछे आप देख लें, उसके पीछे जो अभी हाईकोर्ट पे पेंडिंग है केस, उसमें ओआईसी के द्वारा कभी भी कोई रिप्लाई पेश नहीं किया गया है रिस्पोंडेंट नंबर 2 के द्वारा। How you are concerned with it? रजिस्ट्रार के द्वारा किया। How you are concerned with it?
How it affects you? बताइए, थोड़ा समझाइए ना. How it affects you? उनका अगर प्यून भी लाकर जवाब पेश करता है तो how does it affects you? There has to be a willful disobedience of the order. Excellent. That's what I want to understand. That's why I asked I'm you. sorry. Please बताइए, समझाइए तो थोड़ा सा. मेरा 74.1 की ग्रीवेंस तो आप कुछ भी बना दें, आप दिल का ताड़ बना दें तो हम कुछ आप पहले बताइए. चलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में बताइए कि कंटेम्प्ट कैसे बनेगा. कंटेम्प्ट कोर्ट में इन्हीं का जो रिप्लाई है, आप देखिए एक ही सिर्फ इन्हें वंस यू फाइल एन ही नहीं है, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाई ही नहीं इस है. तरीके की बहस मत करिए. आप महिला हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ. सॉरी मैडम. ठीक है, आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि कंटेम्प्ट कैसे बनेगा. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में अगर इनके ओआईसी ने जवाब फाइल नहीं किया और डिप्टी रजिस्ट्रार ने, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जवाब फाइल किया, उससे कंटेम्प्ट कैसे बनेगा, वो प्रोविजन बता दीजिए मुझे. I'll haul them up. You don't worry. I'll allow your application. Please tell me how contempt is going to be. लिखिएगा, ये 74.1 में लिखिएगा. कंसीडर्ड आइए 14370/2022 an application to initiate proceedings of criminal contempt and IA 16069/22 application for initiation of appropriate action against respondents number 5 and 5 full stop. Petitioner's contention is that instead of the officer in charge, the reply was filed by the registrar of the university and therefore contempt proceedings should be initiated against the said registrar. Next paragraph. When Srimati Vandana Shruti is requested to point out from record that how it is material for the petitioner that which authority is filing the reply when university is taking responsibility for their reply and are not bringing out saying that reply is not binding on them having been filed by an X inverted commas authority, then within inverted commas why authority, comma, then she is unable to demonstrate from either the provisions contained in the Contempt of Courts Act 1972 or from any other statute that how contempt petition 71, how contempt petition will be maintainable. And looking to these facts, comma, this application appears to have been filed with a view to coerce the respondents and gain undue advantage. Such kind of practice in the hands of the petitioner counsel cannot be appreciated. Full stop. Petitioners counsel appear to aid and advise their clients within the parameters of the law. Full stop. As Srimati Vandana Shruti has failed to demonstrate from the record and also from the provisions contained in the Contempt of Courts Act 1971 that how criminal contempt proceedings can be drawn, for which a detailed procedure is laid down in section 15 of the Contempt of Courts Act 1971. Cognizance of criminal contempt in other cases can be taken on its own motion or on a motion made by the Advocate General or any other person with the consent in writing of the Advocate General. Then how criminal contempt is maintainable is not explained by the learned counsel for the petitioner. She is at loss to even point out from the basic statute that how criminal contempt will be maintainable for the act of a registrar in filing the reply to the petition instead of the officer in charge. Stop. Next paragraph.
In my opinion, this is purely an internal matter of the respondent institution as to whom they authorize to file the return/reply. Full stop. Unless respondents take a stand that the reply filed by an ex-authority is not binding on them and it was filed without the due authorization, no action is called for. Contempt, this IA being misconceived and having been filed in excess of the jurisdiction is thereby dismissed. It's contempt proceeding. नोटिस ही नहीं दिया आपको, तो अभी तो कुछ फर्ज करने का सवाल ही नहीं उठता. फर्ज तो जब होगा जब I would have issued notices to you. So there was one other disturbing thing, my lord. Respondent number 5 इन्होंने यूनिवर्सिटी को ही बनाया फिर से थ्रू डायरेक्टर एट द कैंपस एट नरसिंहपुर. क्या करना है उससे? सर उसमें जो इनके जो किंग पिन है वो उन्होंने हमारी तरफ से जवाब दे दिया है, कहते हुए सब इनकी बात मानते हुए यहाँ पे लगाए, तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव किए हैं. ये इसी केस में. अच्छा ठीक है. ये रिस्पॉन्ड है. आइए 1764 हमने दो आईएस लगाई है. हम 1764 और 4920 यही है ना आपकी आईए? कुछ और है? 16069 है for initiating appropriate action against respondent number 5. और दूसरी है सर 1764 of 23 जो आप कह रहे हैं. Contention is नहीं, while arguing on IA 16069 बटे 2022 को चेंज कर लीजिएगा, इनकी नहीं है इनकी. It is submitted that respondent number 5 has acted at the behest of the petitioner and has filed a reply supporting them. He was not authorized to file reply. He is not a part of our setup. Full stop. It is submitted that he is not part of the setup of the university. Yes. Next paragraph. Since petitions have been disposed of, it is not advisable to issue any notice to the respondent number 5 at this stage, and respondents are given a liberty that if they have any grievance against the respondent number 5 or any other respondent, then they will be free to take action in accordance with law. अब इसका दीजिए, ज्योति जाटव का दीजिए फाइल, ओरिजिनल फाइल दीजिए, से वो दीजिए. कहाँ है इसकी नोटशीट? So इसमें in this case the matter went from academic council to, because she was creating a lot of, because she somehow had an inkling that उनकी भी नौकरी जा सकती, वो भी qualified नहीं. She was threatening the staff and other authorities, and she in fact went ahead वो SC/ST Act में law judge कर ली. इसमें सर हमने detailed return में सारा फाइल किया. वो ऑर्डर शीट मुझे बताइए. जी, नहीं तो इसके फिर अलग से करना पड़ेगा. मैडम इसमें हम 10 नोटिस किया था. ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए. कहाँ है इसमें? R4 पे आएंगे सर. दीजिएगा ज्योति जाटव की फाइल. पेज 55. Where is the resolution? ये सब ये है एक्सट्रैक्ट है मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ एकेडमिक काउंसिल 2/12/22 का. क्या कहा इसमें? महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के विद्या परिषद की ऑनलाइन बैठक दिनांक शुक्रवार 2/12/22 समय अपराह्न 3 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय ब्रह्मस्थान करौदी पोस्ट मैंने हुई. बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे. ठीक है. बैठक क्या हुई? पद क्रमांक 10. इसमें जो है ना ज्योति जाटव ने वो जो इनका जो डॉक्यूमेंट अपन ने ऊपर रेफर किया है वो एनेक्चर R4 हो गया. R4 और R5. R4 और R5. ठीक. उसको फिर ये प्रपोज किया एकेडमिक काउंसिल ने और उसको एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने बोर्ड ऑफ फाइनेंस. मतलब स्ट्रेटेजी 20 के हिसाब से, रेगुलेशन 2 के हिसाब से इनको 7 दिन के नोटिस के बाद ही ये मीटिंग बुला सकते हैं. ठीक है सर. Grateful. In this regard, my lord had directed. सुनिए मिस्टर मनोज and Mr. Santosh Kumar. I'll add one line with your consent that this will not be treated as any embargo on their future employment. Certainly. जोड़ दीजिए. In fact, we were recruiting last 1 year. We have recruited in that place also. Regular If they were having SCT qualification or they would have done PhD in the meanwhile, we would have recruited them also. There's no problem. ठीक. Grateful option.
मैडम इसमें रिटन आर्गुमेंट ले लें मैडम, नहीं सिक्योरिटी चाहता हूँ। नहीं मैडम, तो जजमेंट लिखा दी आपके सामने ओपन कोर्ट में, लिख लीजिएगा डिक्टेटेड इन ओपन कोर्ट। सॉरी, in this case my lord have और ये directed. प्रैक्टिस आप बंद करिए, आपको जिसने भी सिखाया है गलत सिखाया है ये। जब ओपन कोर्ट में डिक्टेशन होता है तब रिटर्न आर्गुमेंट नहीं होता है, या तो आप बहस मत करिए, ठीक है, हम समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। चलिए सॉरी मैम।